So we learned how to calculate work done for constant force. We learned how to calculate work done for variable force. Whenever the angle between force and displacement is more than 90, the work done will turn out to be negative. You should know negative work, negative work if theta is more than 90. Okay? तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल अगर 90 से बड़ा है तो वर्क डन विल टर्न आउट टू बी नेगेटिव. दिस इज थीटा, this is greater than 90 degree. So work done by this force and say this is displacement will be negative. समझ में आ गया नेगेटिव वर्क कब होता है और पॉजिटिव वर्क होता है जब एंगल इज एक्यूट, दैट इज थीटा इज लेस देन 90. पॉजिटिव वर्क इज देयर, पॉजिटिव वर्क इफ थीटा इज less than 90. So now positive work is done. For example, this is the force and this is the displacement and angle between them is less than 90, so work done will be positive. समझ में आ गया? क्लियर हो गई बात भाई? ये दोनों, ये डायग्राम दोनों क्लियर है? यस ऑलराइट. अच्छा बच्चों, नेगेटिव वर्क का मतलब क्या होता है? नेगेटिव वर्क का मतलब होता है जो ये एजेंट है ही इज नॉट लूजिंग एनर्जी, ही इज गेनिंग एनर्जी. और पॉजिटिव वर्क का मतलब होता है यू आर डूइंग पॉजिटिव वर्क, तो दिस मींस हियर यू आर लूजिंग एनर्जी एंड समवन एल्स इज गेनिंग एनर्जी. समझ में आ गया नेगेटिव वर्क का मतलब क्या है और पॉजिटिव वर्क का मतलब क्या है? तो अगर आप पॉजिटिव वर्क करते हो तो यू बेसिकली यूज एनर्जी एंड सम अदर बॉडी इज गेनिंग एनर्जी. अगर आप नेगेटिव वर्क करते हो तो इसका मतलब यू आर गेनिंग एनर्जी. ये बात क्लियर हो गई सबको? यस Positive work done by you means positive work done by you means you lose energy. You lose energy. You lose energy. सही है बेटा, समझ में आ गया? पॉजिटिव वर्क का मतलब है, नेगेटिव का मतलब होता है गेन एनर्जी. अच्छा चलो आगे बढ़ते. तो दिस इज वर्क, हाउ टू कैलकुलेट इट वी हैव लर्न. आगे थोड़ी प्रैक्टिस और करेंगे तो और अच्छे से समझेंगे. अब अगला कंसेप्ट बता रहा हूँ. आई एम गोइंग फॉर द सेकंड डेफिनेशन, दैट इज पावर. लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट डेफिनेशन, पावर. Power is the rate at which work is done. Rate at which work is done. Rate at which work is done. Power is the rate at which work is done. Power को जनरली बच्चों दो वर्ड से डिवाइड करता है. One is called instantaneous power. Instantaneous power. And another is called average power. You know, instantaneous quantities are always defined for an instant. और इनको कैलकुलेट करने के लिए डेरिवेटिव हेल्प करती है. जैसे instantaneous velocity, तो dx by dt. और average is always defined over a time interval. That is average velocity total displacement fluid. So instantaneous power में you require help of derivative and here you have to calculate total work about average power. It is defined over a time. So instantaneous power की definition में ही derivative आता है. dw by dt. You have to differentiate work with respect to. और average power होता है total work delta w divided by delta. क्या ये बात समझ में आ गई? यस तो एवरेज हमेशा एक टाइम पीरियड पे डिफाइंड होता है and this is defined at an instant. As instantaneous power is defined at an instant. क्योंकि वो एक इंस्टेंट पे डिफाइंड है इसलिए अपन उसे कई बार ऐसे लिखते हैं dw by dt. dw is small amount of work done which is f dot ds by dt. This is sometimes written as f dot product with ds by dt. छोटा सा डिस्प्लेसमेंट अपॉन छोटा सा टाइम, दैट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. छोटा सा डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय छोटा सा टाइम इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. तो समटाइम वी राइट दिस एज f डॉट. समझ में आ गया भाई फॉर्मूला?
इंस्टेंटेनियस पावर का Yes, sir. Yes. ठीक है. एवरेज के लिए आपको टोटल वर्क फ्रॉम टाइम ही करना है, उसमें कोई शॉर्टकट नहीं है. इंस्टेंटेनियस पावर में यू हैव अ शॉर्टकट फॉर्मूला एफ डॉट. टू कैलकुलेट एवरेज पावर यू टू कैलकुलेट द टोटल वर्क. टू कैलकुलेट एवरेज पावर calculate average power. We need to calculate total work done divided by total time taken. हाँ भाई, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? ये समझ में आ गया बेटा? Yes. Yes. इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं छोटा सा, इससे थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी. लेट्स टेक अ इजी क्वेश्चन. इमेजिन करते हैं दिस इज अ रफ सरफेस वेयर फ्रिक्शन कोएफिशिएंट इज 0.2. Now what we do is we push a block over this with some velocity. Say there is a block. This block is of 5 kg. At t equal to 0, अपन इसे instantaneous velocity देते हैं. Velocity of say 10 meter per second. Now because of the rough surface, it will go slide and somewhere it will stop. A part. Find time of motion. तो मोशन कितनी देर के लिए करेगा? B part. Work done by friction. C part. Power of friction at t equals to 3 seconds. 3 seconds per power of friction. D part. Average power of friction during motion. जब तक चलेगा उस दौरान फ्रिक्शन की एवरेज पावर. ठीक है बेटा, कॉपी पेन तैयार रखो भाई सब लोग, क्योंकि एक्चुअल में चैप्टर बहुत छोटा है. बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे अपन, तब सीखेंगे. तो कॉपी पेन तैयार रखो, फटाफट अटेम्प्ट करो. ठीक बच्चों, चलो अच्छा मैं करता हूँ अटेम्प्ट. नाउ लुक एट द सॉल्यूशन. एक बार सब लोग देखो. सबसे पहले आई हैव टू फाइंड द टाइम ऑफ मोशन. So because of friction force, there will be an acceleration. Solution देखते हैं अपन लोग. तो acceleration will be equals to friction divided by mass. Friction force is minus mu mg. Minus sign denotes it will oppose the motion. Divided by mass. M से M cancel. So acceleration is minus mu is 0.2, g is 10. So it is minus 2 meter per second square. समझ में आ गया भाई सबको? ये क्लियर है बेटा? Alright. So retardation will be 2 meter per second square. The initial velocity of block is 10. So let's apply the formulas. Pehla part, time of motion. A part. The final velocity equals to u plus at. I can apply this because the acceleration is constant minus 2. Which is constant. Final velocity required is 0. Initial velocity is 10. Acceleration is minus 2. Time taken is t. Or you solve it, you get 5 is the value of t. 5 seconds बाद block हो जाए. A part. समझ आ गया भाई A part? Yes. Okay. Let's talk about work done by friction. So let's calculate the displacement. S equals to ut plus half at square. I can apply this equation also because the expression is constant. Displacement was initial velocity t, ut plus half, acceleration is minus 2 times 5 ka square. Or this is 25 meters. This is the displacement. So work is, the body is displacing by distance of 25 meters and friction force is backward maximum. Friction force is mu n. Mu is 0.2 and normal reaction is 5g.
or this is 10. The friction force is coming to be 10 and displacement is 25. Therefore, work done by friction will be force का magnitude 10, displacement का magnitude 25, and cos of angle which is 180. Cos 180 is minus, तो answer is minus 250 joules. समझ आ गया भाई B part? कोई Yes, दिक्कत B part में किसी को? सबको समझ आ गया B part बेटा? yes, sir. Okay. Now I'll go for C part. Power of friction at 3 seconds. We have to find power at 3 seconds. Power होती है बेटा F dot V. Power is F dot V. Instantaneous power. So C part is instantaneous power. Instantaneous power. So it is F dot V. तो फ्रिक्शन फोर्स जो है 3 सेकंड पे वेलोसिटी निकालनी है एट व्हाट टाइम? टाइम इक्वल्स टू 3 seconds. So let's apply V equals to U plus 80. So velocity, the initial velocity was 10. Acceleration is minus 2. Time taken 3 seconds. So this is 4 meter per second. And friction force will be maximum mu mg. So at t equals to 3 seconds, the block is moving forward with a speed of 4 meter per second, and friction is backward maximum mu mg. Mu is 0.2, m is 5, g is 10, or it is coming out to be equals to 10. So power instantaneous is F dot V, force is 10, velocity is 4, angle with them is 180 degree, cos 180 is minus 1, so minus 40 power की unit, work upon time, so it is joule per second. Joule per second को special नाम दिया हुआ है, and that is watt. Watt is based on name of a scientist, इसलिए ग्रुप का capital W. Answer is minus 40 capital. समझ में आ गया? minus 40. क्या यहाँ तक क्लियर है भाई सबको? Yes. Yes, sir. सारे पार्ट क्लियर है बेटा? आराम से देख लो. किसी को कोई भी पार्ट में डाउट है ए बी सी तक तो मेरे को पूछो, मैं वापस डिस्कस करूँ. एबीसी पार्ट तक किसी को भी डाउट है? सबको क्लियर हो गया बेटा? ओके. नाउ एवरेज पावर ड्यूरिंग द मोशन. एवरेज पावर इज टोटल वर्क ऑन टोटल टाइम. ठीक है, टोटल वर्क अपॉन टोटल. तो डी पार्ट एवरेज पावर which is total work upon total time. Total work upon total time. टोटल वर्क क्या हुआ? फ्रिक्शन लगा है पीछे की तरफ म्यू एम जी, और डिस्प्लेसमेंट हुआ है आगे की तरफ 25 मीटर्स. दोनों के बीच का एंगल है 180 और टाइम लगा है 5 सेकेंड. टी इक्वल टू 0 पे मोशन स्टार्ट हुआ और टी इक्वल टू 5 सेकेंड्स पे बॉडी रुक. तो टोटल वर्क डन इज इक्वल्स टू फ्रिक्शन फोर्स 10, displacement 25, angle between them is 180 degree, divided by total time taken is 5 seconds, or it is coming out to be minus 250 divided by 5, or that is minus 25. समझ में आ गया भाई सबको? सॉरी 25 का था, डिवाइड करने पे माइनस. ठीक है, आंसर समझ में आ गया बेटा? माइनस 50 वॉट इज द एवरेज पावर ऑफ फ्रिक्शन. Yes. Yes, sir. ठीक है. अब पावर तो समझ में आ गया, इंस्टेंटेनियस पावर क्लियर हो गया, एवरेज पावर क्लियर हो गया. आई विल टॉक अबाउट अनदर कंसेप्ट. तो देयर इज वन मोर पॉपुलर यूनिट ऑफ पावर. वन मोर यूनिट फॉर पावर. कौन सी यूनिट है भाई पॉपुलर दूसरी पावर की यूनिट? Horsepower. हॉर्स पावर. व्हाट इज 1 हॉर्स पावर? 746. 740. 1 हॉर्स पावर इक्वल्स टू 746. चलो, तो कभी हॉर्स पावर में दिया हो तो कन्वर्ट करना पड़ता है. ओके, लेट्स टेक अनदर प्रॉब्लम नाउ. एक अच्छा प्रॉब्लम लेते हैं. आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन लेते हैं.
a mass is moving in a circle of radius r. एक मास है जो सर्कल में मूव कर रहा है r रेडियस. such that its speed vary with time as v equals to alpha r t. Velocity is alpha r. Velocity is varying with time like this. तो एक मास है, उस मास को अपन m मान लेते हैं, m मास, और वो सर्कल में चल रहा है आर रेडियस के, और उसकी जो वेलोसिटी वो टाइम के साथ चेंज होती है, इज द वेलोसिटी. ठीक है, ये पार्ट. टोटल फोर्स acting on mass at t equals to 2 seconds. A part. B part. Instantaneous power at t equals to 2 seconds. उस मास पे इंस्टेंटेनियस पावर कितनी है उसकी 2 seconds. ठीक है, ये दो पार्ट है. आई एम गिविंग यू 2 to 3 minutes टू सॉल्व. 2 to 3 minutes अटेम्प्ट कर लो बेटा, सॉल्व. शुड आई सॉल्व इट? Yes. ठीक है बच्चों, चलो देखते हैं. A part. So this is the circle in which the particle is moving. Say it is here at t equals to 2 seconds. तो इसके ऊपर दो फोर्स लग रहे होंगे. One is centripetal, another is tangential. So this is the centripetal force and this is the tangential force. क्योंकि the magnitude of velocity is also, and the velocity is also in this direction. Okay. So the total force acting will be tangential and centripetal. All of you know centripetal force is given by mv square by r, and tangential force is given by mass into rate of change of magnitude of velocity. इसको कैसे लिखते हैं बच्चों अपन लोग? ऐसे, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड का रेट. क्या ये बात सुन आ गई भाई? सब लोग देखो जरा एक बार. Yes. So this is the way we write tangential force, mass into rate of change of magnitude of velocity, and centripetal forces, as you know, mv square by r. Okay. तो 2 seconds पे centripetal force की वैल्यू क्या होगी भाई? Mass of the body was m, velocity was alpha r into 2 का square divided by r. Potential force की वैल्यू क्या होगी? That is equals to mass m into derivative velocity. Derivative velocity is alpha r. Alpha r t का derivative कितना होगा? Alpha r. This is the tension force. ठीक है. तो total force is this square plus this square. Under root of this square plus this. That is the total force. Answer will be F total is mass into total acceleration, which is centripetal का square plus tangential का square. So this m centripetal का square v square by r, that is centripetal force. Mass centripetal acceleration is v square by r, which is coming out to be 4 alpha square r square by r r पूरे का square plus tangential, which is alpha r का square. This is okay. सबको समझ आ गया भाई? Yes, sir.
Okay, so this comes out to be m to 16 alpha to power 4 r square plus alpha square r square. We'll take common alpha, but ठीक है, चलो छोड़ देते हैं. This is the answer. Okay, now B part. This is the total book. B part is what is the instantaneous power. अब देखो बच्चों, B part में जब पार्टिकल सर्कल में चलता है तो उसकी वेलोसिटी जो होती है वो टेंजेंट के अलोंग होती है. सेंट्रिपिटल फोर्स सेंटर की तरफ होता है. इन दोनों के बीच का एंगल होता है 90 डिग्री. तो instantaneous power for centripetal force is always 0 because the angle is 90. Instantaneous power केवल tangential force की होती है. Rotational force is along the tangent. So only it has got instantaneous power. क्या ये बात क्लियर हो गई सबको? तो centripetal force की instantaneous power is always 0. Instantaneous power for centripetal force is always 0. समझ में आ गई क्यों? Is always 0. Why? Because angle is 90. So only tangential force will have instantaneous power. So instantaneous power will be only due to टेंजेंशियल फोर्स. समझ में आ गया क्या बच्चों सबको? क्यों ऐसा होता है? टेंजेंशियल फोर्स कितना था? m dv by dt. तो देयरफॉर आंसर हो गया इंस्टेंटेनियस पावर इक्वल्स टू f टेंजेंशियल डॉट वेलोसिटी. f टेंजेंशियल इज मास इनटू टेंजेंशियल एक्सीलरेशन इनटू वेलोसिटी. ठीक है, mass into tangential action into velocity. Tangential action was alpha r, velocity was alpha rt. Alpha rt. Substituting the values, you can get the answer. Substituting the values, you can get the answer. So instantaneous power की value आ गई. Instantaneous power is equals to m alpha rt or this m alpha square r square. समझ में आ गया भी सबको?